So who is the first Dharma Prabhu? Yes, Roji. Who is going to present first? Mataji is first, right? Mataji, you are first. Yes, yes. Yes, Mother. Please start, Mother. It's 6:32, 45 minutes from now. Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Varadhari Yashodanandana Vraj Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare Hare Jaya Radha Govind Radha Govind Radha Govind Radhe Jaya Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Radhe Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Vrindavan Dham Jaya Gauranita 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 Jaya Gauranita Prabhupada Jaya Srila Prabhupada Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Srila Gurudev Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hare Krishna Hare Krishna सभी देवों का नाम मैं नोएडा से बिलोंग करती हूँ और मेरा नाम पुण्यशक्ति देवीदासी है। मैं होम मेकर हूँ और एक छोटा सा भक्ति विश्व उसमें माताओं को थोड़ा सा गाइड करती हूँ। भगवत गीता की क्लासेस थोड़ा सा लेती हूँ, प्रयास करती हूँ, ना ज्ञान नहीं है। और 2 मेरे बच्चे हैं तो उनका होम स्कूलिंग है तो मैं उसी होम स्कूलिंग कराती हूँ उनको। तो हरे कृष्णा। एक्चुअली मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने स्लाइड कि मैं भागवत के बारे में ग्लोरिफिकेशन कर सकूं, बट आप लोगों की आज्ञा है और आप लोगों की ब्लेसिंग मैं प्रयास करूंगी और जो भी मुझसे त्रुटि होगी तो प्लीज क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। और हम आज फर्स्ट कैंटो का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड श्लोक करने जा रहे हैं। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरते। नष्टप्रायेषु भद्रेषु भागवत सेवया भगवते अत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च कृष्ण गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। हम साथ में श्लोका बोल सकते हैं। धर्म प्रोचित कैतवो अत्र परमो निर्मस्यानां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो उन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरं सद्यो हृदय अवरुद्ध प्रकृतिभिः शुश्रूभिः तक्षणात्। धर्म, धार्मिकता,
प्रोजित पूर्ण रूप से अस्वीकृत, कैतव सकाम विचार से प्रच्छन्न, अत्र यहाँ परम सर्वोच्च निर्मत्सरानाम 100% शुद्ध हृदय वालों के सताम भक्तों को वेद्यम जानने योग्य, वास्तवम वास्तविक, अत्र यहाँ वस्तु वस्तु शिवदम कल्याण, तापत्र प्रकार के कष्ट उन्मूलनम समूल नष्ट करना, श्रीमद् भागवतम पुराण में महामुनि श्री व्यासदेव द्वारा कृते संकलन किया गया, रचना की गई। किम क्या है वह आवश्यकता, अन्य ईश्वर परमेश्वर सद्य तुरंत हृदय में अवरुद्यते दृढ़ हो गया, अत्र यहाँ प्रतिभि पवित्र व्यक्तियों द्वारा शुश्रूभी संस्कार द्वारा तत्क्षणात् अविलंब। यह श्रीमद् भागवतम पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सच्चे सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है, जो माया से पृथक होते हुए सबके कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि श्री व्यासदेव द्वारा अपरिपक्व अवस्था में संकलित यह सुंदर श्रीमद् भागवतम पुराण साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है, तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है। जैसे ही कोई ध्यानपूर्वक तथा विनीत भाव से श्रीमद् भागवतम के संदेश सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार अनुशीलन उसके हृदय में परम भगवान स्थापित हो जाते हैं। श्री प्रभुपाद की जय। प्रभु जी, इसका तात्पर्य बड़ा है, तो मतलब एक साथ पढ़ूं कि मैं पैराग्राफ पढ़ूं? आप बताइए जैसे भी। तो भाई एक पैराग्राफ पढ़ दीजिए आप, पहला वाला। श्री प्रभुपाद की जय। धर्म के 4 मूल विषय सम्मिलित है: पुण्य कर्म, आर्थिक विकास, इंद्र तृप्ति तथा भवबंधन से मोक्ष। अधार्मिक जीवन असभ्य अवस्था है। वस्तुतः मानव जीवन का समारंभ धर्म के सूत्रपात से होता है: आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन। ये पशु जीवन के नियम लक्षण हैं। ये चारों पशु तथा मनुष्यों में समान रूप से पाए जाते हैं, किंतु मनुष्यों में एक अतिरिक्त कार्य धर्म होता है। धर्म के बिना मनुष्य जीवन पशु जीवन से ज्यादा अच्छा नहीं है। अतः प्रत्येक मानव समाज में धर्म का कोई ना कोई रूप पाया जाता है, जिसका उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है और जो ईश्वर के साथ मनुष्य के साथ संबंध को बताने वाला है। ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैर्गं रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगन ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यहाँ पर प्रभुपाद ये जो हम फर्स्ट चैप्टर का सेकंड श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, अगर हम पृष्ठभूमि देखें तो जो हम अगर एक सार में बोले कि भागवतम को हमें ग्लोरीफिक करना है, तो हमारे जो फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट 3 श्लोकास हैं, तो हम उससे ये पूरा सार है भागवतम का। फर्स्ट 3 श्लोकास जो है वो उनके सार है, तो इनसे हम ग्लोरिफिकेशन कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट श्लोका है जन्मादस्य, उसमें भगवान को रिप्रेजेंट किया गया है। उसमें भगवान को परम सत्य के रूप में बताया है ना, कि भगवान ही सब कुछ है ना। और जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें भागवतम की ग्लोरिफिकेशन आई है।
भागवतम को ग्लोरीफाई किया गया है। प्रभुपाद ने, हम जब पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर प्रभुपाद उसका ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। और ये थर्ड श्लोक है, उसमें उसपे भागवतम को उसके रस का पान कैसे किया जाए वो बताया है। तो हमने पढ़ा संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, है ना। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। भगवान, जो फर्स्ट श्लोक है उसमें भगवान के साथ हम संबंध कैसे स्थापित करें उस पे बेस्ड है जो हमारा फर्स्ट श्लोक है। जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो अभिधेय, ना, भगवान का संबंध स्थापित करने के बाद में हमें क्या करना है ना, तो उसके बारे में बताया गया अभिधेय। फिर है प्रयोजन, ठीक है। तो प्रयोजन मतलब संबंध के अनुसार कार्य करना। जब एक बार हमारा भगवान के साथ संबंध स्थापित हो जाता है तो फिर उसके साथ हमारा जो उसके हिस्से हम जो कार्य करते हैं वो प्रयोजन। तो वो थर्ड श्लोक का है, उसमें हम वो प्रयोजन के बारे में बताता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभुपाद धर्म के 4 मूल सब्जेक्ट्स बता रहे हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिन्हें हम पुण्य कर्म, आर्थिक विकास और इंद्र तृप्ति और भवन मोक्ष के उसमें डिवाइड किया गया है। तो हम देखते हैं अभी धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष, यानी कि व्यक्ति जो मनुष्य है वो, उसको धर्म, उसका स्वभाव है करना, ना। मनुष्य का स्वभाव है कि वो धर्म के बिना नहीं रह सकता है। तो जब वो धर्म क्यों कर रहा है ये सब चीज, इसमें प्रभुपाद बोल रहे हैं, ये सब चीजों को प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, धर्म प्रोजेक्ट कैटव। जो भी 4 चीजें बताई गई हैं तो ये कैटव धर्म बताया गया है। कैटव धर्म यानी कि धर्म प्रोजेक्ट, यानी कि भागवतम में ये जो 4 की जो सब्जेक्ट्स हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनको भी प्रभुपाद ने झाड़ू मारकर हटा दिया है भागवतम में। भागवतम में उनको स्थान नहीं दिया गया है। फिर है भगवान, परम धर्म भगवान का निरूपण करते हैं। फिर निर्मत्सरा नाम सत्ताम, जो निर्मत्सरता से रहित है वही पाएगा कि भागवतम की ग्लोरिफिकेशन क्या है, भागवतम को कैसे हम समझे। यानी निर्मत्सर मतलब ईर्ष्या और द्वेष से रहित, ना। वास्तव मात्र वस्तु शिवदम, भगवान, भक्ति और भगवान का धाम, ये वास्तव है, ये रियल है। बाकी सब अलग रख दिया है प्रभुपाद ने। प्रभुपाद ने बोला रियल है ना। भगवान, भगवान और भक्ति और भगवान का, और ये सबके लिए कल्याण में है। तापत्रियो उन्मूलनम, जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है तो भगवान हमारे सारे कष्टों को दूर कर देते हैं। उन्मूलनम यानी जड़ से उखाड़ कर फेंक देते हैं। महामुनि कृत्य परीर, भागवतम बहुत सुंदर है और ये व्यासदेव जी ने लिखी है। और वो व्यासदेव जी बोल रहे हैं कि जब भागवतम है तो और किसी ग्रंथ की कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर हृदय शुद्धि, यानी कि जब हम भागवतम को समझ जाते हैं तो भगवान हमारे प्रेम से बंध जाते हैं। और जब हम निर्मत्सरा से मुक्त हो जाते हैं, ईर्ष्या और द्वेष से मुक्त हो जाते हैं, कृति भी शुश्रूप भी तत्क्षणात्, तो भगवान हमारे हृदय में तत्क्षण विराजमान हो जाते हैं। योग्य व्यक्ति, यानी कि योग्य व्यक्ति क्यों कहा गया है, जो ईर्ष्या और द्वेष से रहित है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आहार, निद्रा और भय मैथुन, यानी कि जो भी आहार, निद्रा, भय मैथुन है वो मनुष्य और पशु दोनों में पाई है ना। जो हमने फर्स्ट तात्पर्य, तो दोनों में पाई जाती है। तो अगर हम सिर्फ आहार, निद्रा, भय मैथुन कर रहे हैं तो हम में और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाता, हम भी द्विपाद पशु कहलाएंगे। अगर सिर्फ हम अपने जो लक्ष्य है वो नहीं जान पा रहे हैं। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म क्यों कर रहा है इंसान, हाँ, जीव क्यों धर्म कर रहा है, क्योंकि उसको अर्थ चाहिए। और अर्थ क्यों चाहिए, क्योंकि उसे इंद्र तृप्ति करनी है। और जब वो इंद्र तृप्ति करता है उसके बाद कहीं जाके वो मोक्ष की कामना करता है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि आजकल तो प्रभुपाद भी ये बात बताते हैं कि अभी का जो समाज है, अभी जो चल रहा है, अभी हम कलयुग में देख रहे हैं आसपास, तो यहाँ पर तो धर्म और मोक्ष को भी साइड में कर दिया है। किसी को ना धर्म चाहिए ना मोक्ष चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, अर्थ और काम चाहिए।
तो बहुत सुंदर श्लोका है, आहार निद्रा भयनम च सामान्य एतत् पशुभिः नराणाम धर्मो हि एको अधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशु भी समान। अगर धर्म नहीं है तो हम पशु के समान हैं। तो धर्म क्या, जैसे प्रभुपाद बहुत बार एग्जांपल देते हैं कि जो शक्कर है उसका धर्म है उसका धर्म मिठास है। अगर मिठास नहीं है तो वो शक्कर नहीं है। नमक का धर्म है खारा होना, अगर वो खारा नहीं है तो फिर वो नमक नहीं है। ऐसे ही जो जीव है उसका धर्म क्या है? हरि बोल, आप में से कोई बताएगा? जो जीव है उसका धर्म क्या है? मतलब कि भगवान की सेवा करना। यस, थैंक यू प्रभु जी। तो जीव का धर्म है भगवान की प्रेममयी सेवा करना। उसका जो शाश्वत संबंध है प्रेममयी सेवा करना। अगर वो इस संबंध को नहीं स्थापित करता है, पशु के समान, यहाँ पर वो पशु के समान है। अगर उसमें आत्म साक्षात्कार नहीं है तो वो पशु के समान है। क्योंकि धर्म जो है, दो चीज है होती है कि अगर ज्ञान है और चरित्र नहीं है, ज्ञान है और चरित्र नहीं है, तो ऐसे ज्ञान का कोई लाभ नहीं है। हमने देखा है बहुत बड़े बड़े टेस्ट है या फिर हमारे आसपास भी, हम दूर कहाँ जाए, हम देखते हैं कि कभी कभी लोग किसी फायदे के हिसाब से आते हैं, कुछ प्राप्त करने के लिए आते हैं। स्कॉन में भी हम देखते हैं कि कुछ प्राप्त करने के लिए आते हैं ना। अभी एक हमारे गुरु महाराज हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज के पास एक प्रभु जी गए और वो बोलते हैं कि गुरु महाराज आशीर्वाद दीजिए कि मैं मेरा बिजनेस बहुत अच्छे से, मेरा बिजनेस बहुत चले। तो यहाँ पे वो आर्थिक जो है ना, अर्थ आ गया है, भक्ति नहीं है। जबकि हमें जब शुद्ध वैष्णव के पाना चाहिए तो हमें भक्ति मांगनी चाहिए, बट हम क्या मांग रहे हैं? तो हम हमारे यहाँ पर आसपास में भी देखते हैं कि हमें भी धर्म और का मोक्ष नहीं चाहिए होता है, हमें भी अर्थ चाहिए होता है। क्योंकि इंद्र तृप्ति करनी, इंद्र तृप्ति आ ही जाती है, कहीं ना कहीं इंद्र तृप्ति आ ही जाती है। तो हम बात कर रहे थे कि ज्ञान है और चरित्र नहीं है, तो ऐसे ज्ञान का कोई लाभ नहीं है। ऐसे ही धर्म है और भक्ति नहीं है, ऐसे धर्म का कोई लाभ नहीं है। तो ऐसे ही धर्म को प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये कैटव धर्म है, इसकी प्रभु में कोई जगह नहीं है। तो सिर्फ धर्म है और भक्ति नहीं है। यानी कि बहुत लोग बहुत चीजें कर रहे हैं इधर से ना, हॉस्पिटल्स खुलवा रहे हैं, दान पुण्य कर, यज्ञ करवा रहे हैं, परंतु भगवान सेंटर में नहीं है, तो फिर वो कैटव धर्म हो जाता है। मानव सभ्यता की निरंतर अवस्थाओं में भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने हेतु सदैव होड़ लगी रहती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इंद्रियों को तुष्ट करने हेतु निरंतर स्पर्धा चल रही है। और जब जब मनुष्य बहुत ये कंपटीशन में आ जाता है और बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा वो हो जाता है कि नहीं, मुझे इसके पास जो है वो मुझे भी चाहिए ना, इसके पास ये मुझे भी चाहिए, उसके लिए व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार है ना। और जब हम देखते हैं कि अगर उसको बिना प्राप्त हो रहा है, अगर बिना धर्म किए उसको अर्थ प्राप्त हो रहा है, तो वो कर धर्म भी नहीं करता है। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आजकल गिरजाघर और मॉस्क्यू, जो ये बहुत सारी चीज जो है, अब प्रभुपाद ने बहुत फॉरेन्स में बहुत सारे गिरजाघर जो चर्च हैं वहां पर टेम्पल स्थापित किए हैं, क्योंकि वो खाली पड़े रहते थे, वहां कोई नहीं था। क्योंकि आर्थिक रूप से तो बहुत संपन्न है लेकिन धर्म नहीं है वहां पर, भक्ति नहीं है ना, भक्ति नहीं है। नूनम प्रमत्ते कुरुत विकर्म, है ना। इंद्र को ही लक्ष्य मान रखा है, इंद्र तृप्ति ही लक्ष्य है। तो जब इतनी लक्ष्य है तो फिर भगवान साइड में हो जाते हैं, भगवान सेंटर में नहीं रहते। तो प्रभुपाद एक एग्जाम्पल भी देते थे, एक बार बोलते भी थे कि जो ये मनुष्य जीवन है ये कुत्ते बिल्लियों की तरह नहीं है, कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने के लिए नहीं है ना। जो आज हम देख रहे हैं कि भी लड़ाई हो रही है ना, एक कंट्री दूसरे कंट्री में बहुत हो रहा है। तो प्रभुपाद है कि जो युद्ध हो रहा है, दो कंट्री आपस में लड़ रही हैं एक छोटी सी जमीन के लिए ना, वो खुद को नहीं पता है कि उसकी क्या है।
बहुत नुकसान हो जाता है, जनधन की हानि होती है। लेकिन जब युद्ध हो जाता है उसके बाद पता चलता है कि जिस चीज़ के लिए वो लड़ रहे थे वो यूज़ की नहीं थी, वो यूज़लेस थी। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि ऐसे ऐसे करने से क्या फ़ायदा? इतना इतना आप आर्थिक रूप से संपन्न भी हो जाओगे तो फिर उसका भी नहीं है। तो आर्थिक लाभ की आवश्यकता इंद्र तृप्ति के लिए पड़ती है। प्राय इंद्र तृप्ति के पीछे भाग-भाग कर परेशान होने के पश्चात मनुष्य मोक्ष की ओर मुड़ता है। जब वो थक जाता है इंद्र तृप्ति कर के, फिर वो मोक्ष की तरफ जाता है ना? तो लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद मोक्ष को भी क्या बता रहे हैं? कैटव बता रहे हैं। क्यों ऐसा? सब तो मुक्ति की कामना करते हैं ना, हमें मुक्ति चाहिए। हमने आस-पास भी देखा है, हमारे बड़े-बूढ़े लोग बोलते हैं, हमें मोक्ष हो जाए, हमें मोक्ष चाहिए। लेकिन यहाँ पे उसको कैटव धर्म क्यों बताया है? देखिए, मोक्ष में भी अपना खुद का स्वार्थ है थोड़ा सा, भगवान की सेवा मिसिंग है इसमें। यस, यस, यस। वो अपना हर चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त होकर भगवान की सेवा से ही मुक्त होना चाहते हैं। तो इसलिए इसलिए तार मध्य मोक्ष वांछा कैटव प्रधान, जहाँ कृष्ण भक्ति होई अंतर ध्यान। मोक्ष में भी नहीं है, सेंटर में भगवान नहीं है, इसलिए मोक्ष को भी कैटव धर्म बताया यहाँ पे प्रभुपाद ने। तो यहाँ पर बहुत सुंदर इंद्र तृप्ति के बारे में आगे हम पढ़ रहे हैं कि अगर ये मोक्ष नहीं है, ये भी कैटव है, तो आगे क्या करना है, फिर उसके आगे क्या करना है? ओके, बहुत सुंदर यहाँ पे दी है प्रभुपाद ने। श्रीमद् भागवतम इंद्र तृप्ति संबंधी इन सब कर्मों से परे है। इंद्र तृप्ति वाले सभी कर्मों से परे है। यह नितांत दिव्य साहित्य है जो उन्हीं शुद्ध भगवत भक्तों द्वारा समझा जा सकता है जो स्पर्धात्मक इंद्र तृप्ति से रहते हैं। इस भौतिक जगत में पशु तथा पशु, मनुष्य तथा मनुष्य, समाज तथा समाज और राष्ट्र तथा राष्ट्र के मध्य तीक्ष्ण स्पर्धा चल रही है, लेकिन भगवान के भक्त ऐसी स्पर्धा से बहुत परे रहते हैं। वे भौतिकवादी व्यक्ति से स्पर्धा नहीं करते, क्योंकि वे भगवत धाम वापस जाने के मार्ग पर होते हैं। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं, जिन्हें अपना भगवान के साथ संबंध स्थापित होता है, वो इंद्र तृप्ति की इच्छा नहीं करते और ना ही वो किसी से कंपटीशन में रहते हैं, ना? लेकिन हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है? किसी किसी भक्त के भक्ति विशा में 100 लोग हैं और किसी के 50 लोग हैं, तो वो बोलेगा उसके में क्यों ज़्यादा है? उसके लोग मेरे ग्रुप में आने चाहिए, ना? उसके लोग मेरे ग्रुप में आने चाहिए। और ये मैंने मतलब मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन ये होता है, ये देखते हैं हम है ना? तो ये कॉम्पिटिशन जो है, स्पर्धा जो है कि उसके पास जो है वो मुझे चाहिए। भाई-भाई में भी हम देखते हैं आपस में, है ना? कितना कॉम्पिटिशन है, देश-देश में देख रहे हैं। और हम अपनी बात कर रहे हैं, यानी कि मैं अपनी बात करती हूँ। तो ये जो कॉम्पिटिशन्स है, ये यहाँ पर इतना मतलब, तो जब ये कॉम्पिटिशन्स आ जाता है तो हमारा भक्तों के साथ रिलेशन खराब होने लगता है। हम देखते हैं बहुत खराब हो जाता है। कभी-कभी तो इतना खराब हो जाता है कि एक-दूसरे का चेहरा भी नहीं देख पाते हैं, है ना? तो क्यों है ये? उसके पास जो मुझे चाहिए, है ना? मैं अपना एक रियलाइज़ेशन शेयर करूँगी कि मैं बहुत सेवा में जा रही थी, भगवान की टीटी सेवा में जा रही थी और गार्लैंड सेवा में जा रही थी, कुकिंग में भगवान का भोग बनाने की सेवा में जाती थी। फिर मेरे किड्स, तो फिर मेरे को थोड़ा-सा ब्रेक लेना पड़ा सेवा से, कुछ सालों तक नहीं जा पाई। और मैं बहुत सुंदर वहाँ पे सेवा कर रही थी, गार्लैंड सेवा की, तो मुझे बड़ा लग रहा था कि नहीं, मैं वापस से जो करनी है वापस से, और गुरु महाराज ने भी बोला कि नहीं, तुम्हें वापस से जॉइन। फिर जब मैं वापस से गई सेवा के लिए, तो जब मैंने देखा कि जो से माताजी आई, है ना? वो आज बहुत बेटर सेवा कर रही हैं और बहुत सुंदर गार्लैंड बना है। तो मैं अगर राधा रानी की माला गार्लैंड बनाती थी, तो वो लोग पहले की माला बना रही थी। फिर मुझे जब मैं गई तो देखा कि मैंने वो लोग राधा रानी की गार्लैंड बना रहे हैं और मुझे प्रभुपाद की गार्लैंड बनाने की सेवा मिली।
तो वहां पर अगर मन में ये आ जाए कि नहीं नहीं, अरे ये क्यों बना रही है, मैं तो इनसे सीनियर थी और ये क्यों गार्लेंड बना रही है ना, ये तो मुझे बनानी चाहिए थी। लेकिन नहीं, वहां पे फिर देखा कि नहीं, वो मुझसे भी अच्छी बना रही हैं, वो मुझसे भी अच्छी बना रही हैं, है ना? तो फिर अगर मैं वहाँ पर ये थोड़ा-सा आ भी जाता है ना? आ भी जाता है ईर्ष्या और द्वेष वाला जो है वो आ जाता है। बट वहाँ पर हमें ज्ञान को, अज्ञान को दूर कर ज्ञान को लाकर, शास्त्रों को लाकर देखना है कि हम गलत हैं वहाँ पर, है ना? हम गलत हैं। बहुत सुंदर ये मेरा रियलाइज़ेशन था और फिर मैं आगे अच्छे से सेवा भी कर पाई। वरना आगे यही सब चीज़ें करते हैं तो फिर हम अच्छे से सेवा भी नहीं, यानी कि भगवान की सेवा फिर इससे इफ़ेक्ट हो जाती है। तो ये क्यों होता है? ये ईर्ष्या और द्वेष से हम कैसे बाहर निकलेंगे? ना? कैसे हम बाहर निकले? यहाँ पर बहुत सुंदर बोल रहे हैं कि जो भक्त होता है, वो दूसरों के कल्याण के बारे में सोचता है। चाहे वो कर पाए, चाहे नहीं कर पाए, वो अलग बात है। देखिए, हृदय में ये भावना होती है कि सामने वाले का मैं कल्याण करूँ, है ना? तो जब हमारे अंदर ये ईर्ष्या और द्वेष रहेगा, तो ये कैसे जाएगा? जब हमारे अंदर ब्राह्मणिकल क्वालिटीज़ आएँगी। जब हम ब्राह्मणिकल क्वालिटीज़ को डेवलप करेंगे, तो अपने आप ही ये ईर्ष्या और द्वेष धीरे-धीरे जाएगा, क्योंकि जो ब्राह्मण होता है, वो संतुष्ट होता है। वो संतुष्ट होता है, उसको इतना नहीं चाहिए होता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की उसको इतनी लालसा नहीं होती है। तो उसमें जो क्वालिटीज़ हम डेवलप करेंगे तो धीरे-धीरे हमारा हम संतुष्ट होंगे और हमारा जो ध्यान है वो इन सब चीज़ों से हट के भगवान की सेवा में लगेगा। ओके। तो वेदों में 3 मार्ग बताए गए हैं। पहला है श्रेष्ठ लोगों की प्राप्ति के उद्देश्य से सकाम कर्म करना, दूसरा है देवलोक जाने हेतु विभिन्न देवताओं की पूजा करना और तीसरा है परम सत्य तथा उनके निर्विकार पक्ष का साक्षात्कार करके उसे तदाकार करना। तो ये जो था, ये निर्मत्सरा नाम, यानी ईर्ष्या और द्वेष से रहित होकर हम अपने आप को योग्य बनाएं ताकि हम हमको समझ पाए, है ना? तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई योग्य नहीं है तो वो भागवतम को नहीं पढ़ सकता है ना? वो धीरे-धीरे अगर वो भागवतम को पढ़ेगा तो वो अपने आप शुद्ध होता जाएगा। ये भागवतम महिमा है। तो नीचे प्रभुपाद बता रहे हैं कि कर्म कांड तथा उपासना कांड से भी उच्चतर है, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड से भी उच्चतर है भागवतम। क्योंकि यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा का निर्देश देता है। जो ज्ञान कांड है, ध्यान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड, ये लोग भी कभी-कभी एक दूसरे को कंपटीशन करते हैं ना, स्पर्धा करते हैं। ज्ञान वाले बोलते हैं कि नहीं, हम बेटर हैं, कर्म कांड वाले बोलते हैं नहीं, हम बेटर हैं, और उपासना कांड बोलते हैं हम बेटर है। तो जो ज्ञान कांड में स्थित है वो कहाँ जाने वाला है? कहाँ जाने वाला है वो? क्या वो गोलोक वृंदावन जाएगा? नहीं No, मालूम। no, upper planetary system. Okay. वो ब्रह्म ज्योति में जाएगा। जय। जो उपासना कांड में है, जो देवताओं की पूजा करते हैं, वो जिस देवता की पूजा करेगा उस लोक में जाएगा, है ना? और जो कर्म कांड है वो किस लिए है? वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये करते करते अगर वो अच्छे से शास्त्रों के हिसाब से कर रहे हैं तो वो स्वर्ग जाएंगे, है ना? लेकिन यहाँ पर कोई भी भगवत धाम नहीं जा रहा है, इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये सबसे उच्चतर है भागवतम, है ना? क्योंकि भागवतम हमें भगवान के पास ले जाती है और भागवतम हमें भगवान से जोड़ रही है, भगवान की सेवा करने के लिए प्रेरित कर रही है। हरे कृष्ण। यह ज्ञान भगवान श्री शक्ति, भगवान के साथ तथा एक तथा उनसे भिन्न भी है तथा मनोधर्मियों पर करारी चपत है, जो इस शक्ति को परम पूर्ण के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। जब यह वास्तविक रूप से इसमें आ जाता है तो अद्वैतवाद की धारणाएं अपूर्ण लगने लगती है। भेदाभेद दर्शन पर आधारित इस दिव्य चेतना का विकास हो जाने से तीनों प्रकार के कष्टों से तुरंत ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ये 3 प्रकार के कष्ट हैं: मन तथा शरीर से उत्पन्न दुख, अन्य जीवों तथा द्वारा पहुंचाए गए दुख, प्राकृतिक विपदाओं से उत्पन्न पर किसी का वश नहीं होता। तो हमने पढ़ा है आध्यात्मिक, आधि दैविक और आदि भौतिक जो कष्ट होते हैं ना,
तो जब हम द्वैतवाद और अद्वैतवाद को समझ लेंगे कि भगवान और जीव एक भी है और अलग भी है, भेदा भेद है ना, एक भी है और अलग भी है। तो जब भगवान जो हम जीव हम इसको समझ लेंगे तो हम ये 3 प्रकार के जो तापत्रय उन्मूलनम है, इनसे हम मुक्त हो जाएंगे ना। हमने बहुत सुंदर चैतन्य चेतावनी में कोलावेच श्रीधर की स्टोरी सुनी है। कोलावेचा श्रीधर जो है ना, तो वो कितना सुंदर, वो उनके पास कोई संपन्नता नहीं थी, वो संपन्न नहीं थे, फिर भी वो इन तीनों कष्टों से मुक्त थे, क्योंकि उनको पता था कि उनका भगवान के साथ क्या संबंध है और उनका लक्ष्य क्या है, भगवत प्राप्ति। तो कुछ नहीं होते हुए भी वो संपूर्ण है ना। जबकि हमने पहले पढ़ा निर्मत्सरा नाम सताम, है ना, तो वहां पर जब ईर्ष्या, भगवान से भी ईर्ष्या कर रहे हैं लोग, नहीं, शिशु सबसे अच्छा एग्जाम्पल शिशुपाल, जो भगवान सामने है लेकिन फिर भगवान से ईर्ष्या कर रहा है, द्वेष कर रहा है। दुर्योधन, वो भी द्वेष कर रहे हैं ना। तो जो भगवान से ईर्ष्या द्वेष कर सकते हैं, तो जिनके सामने भगवान है तब वो ईर्ष्या द्वेष कर सकते हैं। तो हम जैसे तो बहुत मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, हम तो बहुत हमें सीखना है, समझना है कि हमारी क्या क्या कमियां हैं। जब श्री भगवान से एक होते हुए भी उनकी स्थिति उनके नित्य दास के रूप में है। भौतिक में मनुष्य झूठी अपने आप को आसपास की सब चीजों का स्वामी मानता है, इसलिए वह जीवन में 3 प्रकार के संतापों से सदैव पीड़ित रहता है। किंतु जो ही उसे नित्य दास के रूप में अपनी वास्तविक स्थिति का पता चलता है, वह तुरंत इन सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। जैसे गजेंद्र ना, जब जीवन में कष्ट आया तो उन्हें अपनी वास्तविक स्थिति याद आई थी कि मैं तो भगवान की बहुत सुंदर भक्ति कर रहा था, और उन्होंने भगवान को पूरी शरणागति से पुकारा और भगवान ने उद्धार कर दिया। और भगवान ने पहले वो जो क्रोकोडाइल था उसका उद्धार किया, क्योंकि उसने गजेंद्र के पांव पकड़े हुए थे, भक्त के पांव पकड़े हुए थे, इसलिए उसका उद्धार भगवान ने। तो भगवान बहुत दयालु है, तो अगर हम शुद्ध भक्तों के चरण भी पकड़ लेंगे तो भी भगवान हमारा उद्धार कर देंगे ना। तो प्रहलाद महाराज के जीवन में तो इतने कष्ट थे, इतने कष्ट थे, फिर भी उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी, है ना। उन्होंने बिल्कुल मतलब ये था कि उनके जीवन में उनके पिता उनको कष्ट दे रहे थे, और जब नरसिंह भगवान ने उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए ना, तो उन्होंने ये नहीं बोला मुझे बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, है ना। उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने बोला उद्धार कर दो, जितने भी मेरे का उद्धार कर दो। तो ये जब कब आएगा, तब जब हम समझ लेंगे कि ईशावास्य इदम सर्वम यत् किंचन जगता जगत, है ना। सब कुछ भगवान से ही आता है, भगवान भगवान से ही है ये पूरा जगत। okay? फिर है श्रीमद भागवतम श्रील व्यासदेव द्वारा वेदांत सूत्र की गई व्यक्तिगत टीका है। इसका लिखन उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन की परिपक्व अवस्था में श्रीमद नारायण के अनुग्रह से किया। श्रील व्यासदेव भगवान श्री नारायण के प्रमाणिक अवतार हैं, अतः उनकी प्रामाणिकता पर किसी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाया जाता। जब नारद मुनि को जब व्यासदेव जी को पता चला कि वो बहुत असंतुष्ट थे, उन्होंने इतने वेद पुराण लिखे ना, बहुत असंतुष्ट थे ना, फिर नारद मुनि ने उनको जब प्रेरणा दी, तो उन्होंने नारद मुनि की प्रेरणा से उन्होंने भागवतम लिखा। भागवतम क्यों लिखा? हमारे लिए लिखा, कलयुग, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पर हमारी जो मेमोरी है, कलयुगी जो जीव है उनकी मेमोरी है वो बहुत शॉर्ट है ना। हम लोग भूल जाते हैं, बार बार पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, बार बार पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं। तो जो आचार्य होते हैं उनको पता होता है ना। और जो व्यासदेव है वो स्वयं नारायण के अवतार है ना। तो यहाँ पर जब नारायण के अवतार है, उन्होंने भागवतम लिखी है, तो और किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है। चैतन्य महाप्रभु जो है भागवतम को ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, और हमारे प्रभु ने बहुत सुंदर मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है ना। तो सिर्फ अगर हम मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं तो हमारे जो पंचाशार्थ है वो सब पूरे हो जाते हैं, मॉर्निंग सिर्फ मॉर्निंग प्रोग्राम करने से, क्योंकि उसमें चैंटिंग भी
डेडिटी वर्शिप भी आ जाती है, भागवतम क्लास आ जाती है ना, भक्तों का संग भी आ जाता है। तो जब हम ये मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं, उसमें भागवतम क्लास करते हैं, तो वो सब कुछ उसमें कंप्लीट हो जाता है। तो भागवत यहाँ पे ग्लोरिफिकेशन किया गया है। अब हम भागवतम को समझेंगे कैसे? कैसे समझेंगे हम भागवतम को? इस दिव्य संदेश को ग्रहण करने के लिए उचित विधि है इसे विनीत भाव से सुना जाए, मिसलीव से सुना जाए, है ना, यानी कि पूरी तरह से शरणागत होके सुना जाए। तद्वित्ति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो जब हम गुरु के पास जाते हैं तो हमें चैलेंजिंग मूड में नहीं जाना चाहिए। भागवतम को सुनने के लिए चैलेंजिंग मूड में नहीं जाना चाहिए। कभी देखते हैं हम बहुत अच्छे-अच्छे भक्त क्लास दे रहे होते हैं और कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं कि वो प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न पूछते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, यानी कि प्रश्न पूछने लायक भी नहीं होते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य ये होता है कि हम इनको चैलेंज कर रहे हैं, इनको आता है, कितना आता है ना? वहाँ पर वो शरणागत नहीं होता है, वो विनीत, मतलब वो पूरी तरह से शरणागत या पूरी तरह से नहीं सुनते, उनका हमेशा चैलेंजिंग मूड रहता है। कैसा बनना है हमें? शुश्रूषु बनना है ना? भागवतम में शायद चैप्टर में भी एक श्लोक है, एक श्लोक आया था, शुश्रूषु श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि, है ना? इन चैप्टर में शायद है, वो पूरा मुझे लर्न नहीं। तो वो जो शुश्रूष है, यानी कि हमें शुश्रूषु बनना है ना। जब हम शुश्रूषु बनेंगे तो हम भागवतम को समझने में उत्सुक, यानी कि भागवतम को समझने के लिए होना चाहिए, उसको रुचि होनी चाहिए, योग्य व्यक्ति से सुनना चाहिए, है ना, और विनीत भाव से शरणागत होकर सुनना है। ठीक है, तो बोलते हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग तो करते हैं, ये भागवतम क्लास करते हैं, भागवतम कथा करते हैं 7-7 दिन की। बहुत सारे लोग तो सुनते भी हैं कथा, है ना, सुनते भी हैं। कभी-कभी लोगों की रुचि नहीं होती है। कई बार हम देखते हैं कि जब भागवतम क्लास हो रही होती है, तो बहुत सारे लोग आके बैठ जाते हैं, है ना? तो क्यों होता है कि भागवतम क्लास के बाद प्रसादम होने, है ना? तो भागवतम क्लास में उनका इंटरेस्ट नहीं है, उनका प्रसादम में इंटरेस्ट है ना? तो उनकी रुचि प्रसादम में है, इसलिए वो भागवतम क्लास में आके बैठ जाते हैं। तो ऐसे अगर वो भागवतम सुनेंगे तो उनको समझ आएगा, नहीं आएगा पता नहीं। लाभ तो मिलेगा, स्वाभाविक है कि अगर वो भागवतम क्लास में बैठे हैं, शुद्ध भक्तों को देख रहे हैं, उनका शरण संग कर रहे हैं, तो उनको लाभ मिलेगा, उतना लाभ नहीं मिलेगा, है ना? क्योंकि कॉन्शियसनेस कहाँ पर है? प्रसाद में। कब ये क्लास खत्म होगी और कब हमें प्रसाद है ना? तो पर लेकिन ऐसा अच्छा भी है, एक तरह से अच्छा भी है कि वो भगवान मतलब भक्त कर रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं और धीरे-धीरे पाने से वो प्योर भी होंगे ना, प्यूरिफिकेशन होगा और फिर वो भक्ति में है। हमने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं कि प्रसाद के पाने के बाद, प्रसाद के नाम से सारे लोग भक्ति में जुड़ते हैं, है ना? कई लोग डिस्ट्रीब्यूशन से, बुक डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ते हैं, कई लोग कीर्तन से, हरि नाम से जुड़ते हैं और कई लोग प्रसाद से जुड़ते हैं, ना? तो ये भी बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर बोला गया है कि जब उन्हें भक्तों की सभा में श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वे सहजा हिचकिचाने लगते हैं। कभी-कभी श्रीमद् भागवतम के पेशेवर पाठक ऐसा श्रीमद् भागवतम की गुह्य लीलाओं की चर्चा करने लगते हैं और उनकी विख्यान यौन अश्लील साहित्य के रूप में करते हैं। तो हम देखते हैं जो भागवतम करते हैं 7 दिन की भागवतम, ये वो आदि भागवत, वो भगवा भागवतम में तो उसमें कुछ होता नहीं है, वो बहुत सारे भजन वगैरह गा के और वो सब उसको 7 दिन में खत्म कर देते हैं ना। तो लोग आते हैं, कीर्तन करते हैं, है ना, एंजॉय करते हैं और जाते हैं, है ना। तो ऐसे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ऐसे भागवतम को सुनने से कोई लाभ नहीं होता है ना। तो भागवतम सुनने के लिए शुशु बनना है। तो हम प्रभुपाद के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं ना। एक बार ब्रज में की कला में प्रभुपाद के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज कथा कर रहे थे ना, और उनकी काफी काफी लंबी कथा चल रही थी ना, और प्रभुपाद सुन रहे थे और उनके प्रभुपाद के जो साथी थे और लोग थे
जो और डिवोटीज थे, वो शेष शाही में दर्शन करने चले गए। शेष शाही जो है ब्रज में ही है, वहां पर ब्रजमंडल परिक्रमा में आता है, तो वहां पर दर्शन करने चले गए थे। तो जब वो दर्शन करके आए, तो भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर महाराज ने बोला कि आप कहाँ गए थे? तो उन्होंने बोला हम दर्शन करने गए थे। तो उन्होंने बोला अच्छा, आप दर्शन करके आ गए? बोले हाँ। तो उन्होंने पूछा कैसी रही आपकी आंखों की एक्सरसाइज, है ना? तो भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर महाराज ने बोला कि आपकी आंखों की एक्सरसाइज कैसे रही? उन्होंने ये नहीं बोला कि आपके दर्शन कैसे हुए, ना, क्योंकि जब तक श्रवण नहीं करते तब तक वो होने ही वाला नहीं है। हम देखते हैं कि जब हम भक्तों के संग जाते हैं धाम में, और जब हम अकेले जाते हैं उसमें बहुत डिफरेंस है ना। जब भक्तों के संग जाते हैं और श्रवण करते हैं, तब हम उस धाम को हम अच्छे से देख पाते हैं, है ना। और हम अकेले जाते हैं तो हम क्या करते हैं, घूम जाते हैं। कोई व्यक्ति अनेक पुण्य कर्मों के पश्चात श्रीमद् भागवतम सुनने के योग्य बन पाता है। महामुनि श्री व्यासदेव बुद्धिमान एवं विचारवान व्यक्तियों को आश्वासन देते हैं कि श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से उन्हें श्री भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। वेदों में वर्णित साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाओं को पार किए बिना इस संदेश को ग्रहण करने हेतु सहमत होने मात्र से मानव परमहंस पद को तुरंत प्राप्त कर लेता है। ओके, सुश्रू बनेंगे, और अगर हम निर्मत्सरता से रहित रहेंगे, ईर्ष्या और द्वेष से रहित रहेंगे, तो भगवान हमारे हृदय में तत्क्षण हमारे हृदय में स्थित हो जाते हैं, है ना। तो महामुनि यहाँ पर बताया गया कि श्रवण करने से भगवान का साक्षात्कार, तो इतना आसान प्रभुपाद ने बताया है ना। जो पूरा जो हमने श्लोक समझा है, तत्क्षणा, है ना। पूरा जो श्लोक में क्या प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है उसको धर्म बताया है ना, और बाकी जो कैटो धर्म बताया है, और उसके बाद ये जो ईर्ष्या और द्वेष से रहित होना है, हमें निर्मत्सराम योग्य बनना है भागवतम को समझने के लिए। और इसमें बहुत सुंदर प्रभुपाद बता रहे हैं कि प्रभुपाद का मूड ये था कि सबको शुद्ध भक्ति देना है ना। प्रभुपाद का मूड ये नहीं था कि और कुछ ये धर्म कुछ लाभ प्राप्त करना है या किसी देवता के पास भेजना है ना। प्रभुपाद ने बहुत स्ट्रिक्ट थे इस चीज के लिए, है ना। सिर्फ कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना। प्रभुपाद ने सिर्फ कृष्ण को बोला है कि कृष्ण के लिए, कृष्ण की शुद्ध भक्ति करने का हमें प्रयास करना है। ये देवता उपासना कारण सबको दे रखा है। तो प्रभुपाद चाहते थे कि वसुदेव कुटुंबकम का प्रभुपाद का लक्ष्य था ना। प्रभुपाद बहुत सुंदर ये इसको मूवमेंट को स्थापित करना चाहते, इस्कॉन मूवमेंट को, वसुदेव कुटुंबकम। हम देख रहे हैं आज हो भी रहा है, काफी हद तक हमारा इस्कॉन ग्रो कर रहा है ना। तो मैं एक सुंदर सा भजन गाना चाहती हूँ, अगर गा सकती हूँ, जो ये पूरा हमने सुना है उसका सार है। हरि बोल। शुक्र जी, शुक्र। हाँ जरूर। ओके। प्रभु मोरा निवेदना, नहीं मांगी देह सुख विद्या धन जाना, नहीं मांगी स्वर्ग मोक्ष नाही मांगी, ना करी प्रार्थना कोनो तेरा नाम, निज कर्म गुणा
जे जे जन्म पाई, जन्मे जन्मे तेनो तवा नाम गुण गाए। ते मात्र तुम्हारे चरण आगे तू आते गए, जागे अनुक्षण विषय प्रिय अच्छा ये हमारा, ते माता प्रीति चरणे तुम्हारा। विपद संपदे तहाँ धीरे धीरे कहती हो के ना मेरा प्रभावे। पशु पक्षी होए थकी, स्वर्गे वाणी रोए, तब भक्ति रहो भक्ति विनोदा है दोए। प्रभु तव पदायुगे मोरा निवेदना, नहीं मांगी देहा सुख विद्या धन जान। हरे कृष्ण। ये बहुत सुंदर मुझे भजन लगता है भक्ति विनोद ठाकुर का, और मुझे लगा कि ये जो भी प्रभुपाद के पर्पट था उससे रिलेट हो रहा है भजन। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस भजन का क्या पहला लाइन क्या है? प्रभु तव पद युगे। अच्छा, वो तो पद जुगे। ओके ओके, थैंक यू, वेरी नाइस। ओके, थैंक Who wrote this? Who wrote this bhajan? Who wrote this bhajan? वॉइस ब्रेक हो रही है। माता जी पूछ रहे हैं कि भजन किसने गाया है, लिखा है? भक्ति विनोद ठाकुर। ठीक है। So, if anyone has any doubt, I want to perform. Prabhuji, your voice is not very clear, Prabhuji. It's breaking, Prabhuji. Yeah, Prabhu, just give me 2 minutes, Prabhu. In the meanwhile, if anyone has a question, please ask. Is it okay, Vaibhava Vishal Prabhu? Yes, now it's audible, Prabhuji. Just give me 2 minutes. I'm going in a quiet room. हरे कृष्णा माता जी, मेरा एक क्वेश्चन है। आप कर्म कांड के बारे में आप बताया, कर्म कांड और उपासन कांड। कर्म कांड करने वाले स्वर्गलोक जाते हैं, हमने सुना है, और उपासन कांड करने वाले भी, वो फॉलो करने वाले भी स्वर्गलोक जाते हैं, ऊपर का मीन्स वो भौतिक लोग जाते हैं ऊपर का। और इसके बारे में मुझे थोड़ा क्लैरिटी चाहिए था माता जी। एक्चुअली मैं स्वर्ग लोग तो है ही, लेकिन उपासना कांड में मतलब और भी बहुत सारे जो देव हैं, है ना। कई लोग सूर्य की पूजा करते हैं, है ना। कई लोग सूर्य की और शिव जी की पूजा करते हैं, है ना। अलग अलग जो आर्थिक उनको चीज चाहिए होती है, भौतिक चीजों के लिए अलग अलग की कोई देवी जी की पूजा करता है ना। तो वो उस लोक में जाते हैं। वो भी उपासन कांड के अंडर आते हैं, वो देवी देवता का पूजा भी कर्म कांड नहीं है। कर्म कांड ये है कि धर्म शास्त्रों के हिसाब से जो कार्य करते हैं, मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग है माता जी, मैं हो सकता है मैं गलत हूँ। हाँ, जो कर्म कांड वो शास्त्रों के हिसाब से जो धर्म यज्ञ काम जो भी ये भी जो भी करना होता है हिसाब से, वो कार्य करने वाले जो अच्छे से शास्त्रों के हिसाब से कार्य करते हैं, वो सर्व लोग होते ही हैं, है ना। और जो अलग अलग देवता, जैसे किसी को कुछ प्राप्त करना है, कुछ प्राप्त करना है, वो अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, तो वो उस लोक में भी जा सकते हैं। ओके माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। यस प्रभु जी।
माता जी, इस परपट में प्रभुपाद कंपटीशन के बारे में बोल रहे हैं, तो मुझे सिर्फ एक सवाल पूछना था आपसे। बुक डिस्ट्रीब्यूशन के पहले दिनों में क्या बोलते हैं उनको, ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन हुआ करता था, जहां पर जब एक टेम्पल वालों को पता चलता था, अरे उस टेम्पल वालों ने 10 बुक बेचे तो हम लोग 100 बेचेंगे, ऐसा करके वो कंपटीशन करते थे। तो क्या आप उसके बारे में कुछ कमेंट कर सकती हैं माता जी? यस प्रभु जी, एक्चुअली है, अगर भगवान सेंटर में है ना, भगवान सेंटर में है तो वो बहुत प्यूरिफाई है ना, वो तो उसका तो कहना ही नहीं है प्रभु जी, है ना, क्योंकि वो भगवान में है। वहां पर ये है कि अगर आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा करना चाहते हो तो आप उस व्यक्ति की टांग खींच के उसे गिराना चाहते हो, ऐसा नहीं है ना। और जो बहुत ईर्ष्या द्वेष हो जाता है वहां पे ये होता है कि जैसे मैं हमने एग्जांपल दिया कि भक्ति विषया का एग्जांपल दिया है ना, या और भी कुछ, मतलब इसके पास धन क्यों ज्यादा है, तो वहां पर एक छोटी सी स्टोरी भी आती है इसके, मैंने सुनी थी, किसी लेक्चर में सुन रही थी कि एक व्यक्ति था, वो शिव जी की बहुत पूजा करता था, है ना, शिव जी को बहुत मानता था। तो उसने ना शिव जी मतलब से शिव जी तो आशुतोष हैं, तो वो प्रकट हुए, तो उन्होंने पूछा तुम्हें क्या चाहिए? तो उन्होंने बोला लेकिन एक शर्त पे मैं तुम्हें झूठ, उन्होंने बोला 3 चीजें तुम मांग सकते हो लेकिन एक शर्त, है ना? क्या शर्त है? कि अगर मतलब जो भी तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारे पड़ोसी को डबल मिलेगा, है ना? जो भी तुम मांगोगे वो तुम्हारे पड़ोसी को डबल मिलेगा। तो उसने पहले बोला कि मुझे ना एक कार चाहिए, है ना? तो बोला ठीक है तथास्तु, तो उसके पड़ोसी को 2 कार मिल गई, है ना? ने बोला कि मुझे सुंदर वाइफ चाहिए, तो उसको 2 वाइफ मिल गई। तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा तीसरा क्या माँगना है? तो वो सोच में पड़ गया कि अब मैं क्या माँगू, क्योंकि वो पड़ोसी से इतना ईर्ष्या द्वेष में भरा हुआ था, है ना? तो उसने बोला मेरी एक आँख फोड़ दो, एक आँख से अंधा हो जाऊँ। तो क्या, ताकि पड़ोसी दोनों आँख से अंधा हो जाए। तो ये थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन अच्छा है प्रभु जी, है ना? स्पिरिचुअल कॉम्पिटिशन अच्छा है कहीं-कहीं पर। लेकिन जब हम किसी से ईर्ष्या द्वेष में इतना इतना ज़्यादा मतलब वो हो जाए कि हम किसी को नीचे गिराना चाहें, है ना? या हम किसी का बुरा करना चाहें, वो बहुत गलत हो जाता है। पता नहीं मैं कितना सही हूँ प्रभु जी, बट थैंक यू माता जी। वेरी नाइस आंसर माताजी, थैंक यू। Hare Krishna. Thank you, Mataji. Am I audible? Yes, Prabhuji, better. Yes, Prabhuji, you are audible. Okay, I just need 2 more minutes, Prabhu. In the meanwhile, Prabhu, I request all the devotees to share your feedback also on Mataji's session. Vaibhava Vishal Prabhu, please share the link in the chat box. Okay, Prabhuji, just give me 1 minute, I'll have to Just be 2 minutes. They are almost finished. I've sent the form for feedback to Mataji. Please fill it out, please.
और माता जी, I don't have a question but just one sharing. मैं भी प्रसादम की वजह से ही कृष्ण कॉन्शियसनेस में एंटर किया था। यस प्रभु जी, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं प्रभु जी ना। तो अभी हम सुन रहे थे कौन से बहुत सुंदर, अभी कुछ बोला था कि बहुत सुंदर एक बिजनेसमैन है, कोई है, तो वो भी प्रभुपाद के मंदिर के पास ही, उनके पास या तो खाने के लिए पैसे थे या फिर घर रहने के लिए पैसे थे। अच्छा, एप्पल के सीईओ। हाँ हाँ, तो उन्होंने भी मतलब मंदिर के पास प्रसाद पाके, मंदिर से प्रसाद पाके वो इतना आ गए। तो बहुत प्रभुपाद ने बहुत सुंदर मूवमेंट भी चलाया है। बट हम देखते हैं कई बार ना, कई बार बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि याद में कमी नहीं करता और भागवतम में रस नहीं लेता। तो आज पनीर मा, क्यों नहीं है? माता जी, आपने वो जो बेसिकली अगर आपको लोगों को सुलाना है तो आप शुरू कीजिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और अगर यस, आपको सबको जगाना है तो आप शुरू कीजिए महाप्रसाद, महाप्रसाद। महाप्रसाद गोविंद। Do you understand English? हरे कृष्ण, पुण्यशक्ति मतलब माता जी, मेरा आवाज आ रही है क्या? जी आ रहा है, लेकिन बैकग्राउंड नॉइज भी है तो जी। So it's a fine song. इस जी, इट्स बेटर जी। Hare Krishna, माता जी, I'm audible now? यस प्रभु। Okay. The stream can visible too. Okay. Hare Krishna. So Mataji, thank you so much for a wonderful presentation, Mataji. It was a very good presentation. So I would like to share my feedback. First, the positives and the room for improvement. So coming to your presentation skills, the positives are you reached out to audience very nicely, Mataji. You introduced yourself in the beginning, and you follow the ideal structure, like you get the Kirtan and then the Mangalacharan, setting the verse and everything is very common. The volume is also sufficient. There are variations in your pitch. Speech is also very clear, easy to follow. Language is also very fluid. It's not stilted. Doesn't look like you're searching for words. Mataji, do you understand English? Purnashakti Mataji. यस प्रभु जी। आप इंग्लिश समझ सकते हैं ना, लेकिन बात नहीं कर सकते। यस प्रभु जी, यस प्रभु। ओके ओके, मैं भी हिंदी बात कर सकता, लेकिन मतलब मेरे उतनी शायद अच्छी नहीं, उतना प्रोफिशिएंट नहीं हूँ, बट मैं हिंदी बहुत जानता हूँ। बट you understand English, that's why I want to speak in English. Is it okay, Mataji? Okay, Mataji? यस प्रभु, यस प्रभु जी। Okay. Okay. So, Mataji, nicely avoided space fillers too. I really appreciate the way of presentation. Like uh, you're very slow, calm, you know, very cool. So, my nicely avoided space fillers too. And had a good pose, use proper gestures, and you're very flexible, Mataji, during the whole presentation. I mean, it doesn't look like that you're rushing to finish the time. Of course, you finish your presentation and then you sang the bhajan. So by the time is finished, but it's fine. And you're very warm out being in person too. And you're also very contributions.
I really appreciate that. And Voice. you displayed respect to their opinions too. My voice breaking? Yes, Prabhuji. Vaibhava Vishal Prabhu? Vasudhara Prabhu, am I audible? Yes, Prabhuji, audible. Sometimes a little here and there, it's breaking. Continue, Prabhuji, continue. Or you can switch off the video, Prabhuji, if you try, switch off the video and see. Okay. Is it okay now? Yes, Prabhuji, it's better, much better. Is it much better? Yes, Prabhuji, yes, Prabhuji. Okay. Mate, you started on time, you also finished on time. And you also managed that very well and made room for question and answers. So, Mate, the room for improvement in your presentation skills are nothing much. I just want to share that we can regularly check with the audience whether they could able to follow you or not, whether they could able to understand you or not, Mataji. Just if they need any clarification. Is it okay, Purnashakti Mataji? Yes, Prabhuji. आप बीच बीच में पूछ सकते हैं कि अगर उनको कुछ डाउट है, अगर उनको कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, और वो समझ पा रहे नहीं, आपको फॉलो कर पा रहे नहीं, ये सब पूछने से थोड़ा अच्छा है मुझे. Okay, Prabhuji. Yes. Okay. And apart from that, everything is good, Mataji. Your presentation skills are good. And coming to body of presentation, Mataji आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ी इस श्लोक को, इसका pronunciation, also reason with fluidity, and आपने इस श्लोक के you explained all the important points, Mataji, the focus of learning in this verse and also the purport very nicely. I guess you have covered from the purpose, but nothing to the end, Mataji. Different sections में जो Prabhupada ने first the difference between the animals and the human life. Another verse. Slok quote नहीं किया शायद. Can anybody quote the slok what Prabhupada is mentioning here? It's a common slok आहार निद्रा भयमैथुनं च from Hitopadesha. Very good. Please quote, Mataji. आहार Yeah, निद्रा please quote the full verse. च सामान्यमेतात् पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषु अधिको विशेषो धर्मेण हि न पशुभिः समान. Very good. So Prabhupada is referring to that verse. And in one more line, Prabhupada is also referring to one more verse. I appreciate if anybody can guess the verse that just by listening to Srimad Bhagavatam, Krishna appears manifest in our heart. So which verse Prabhupada is referring to? Srimad Bhakti Vaibhava. The beautiful verse. Where is that Mataji? Ketida Mataji, you are also here. Ketida Mataji, Hare Krishna. Can you guess? I can give clue if you want. It's wonderful. They are actually slokas to memorize for your Bhakti Vaibhava. Immediately Krishna enters through your eyes, ears, and you manifest in your heart. I forgot the 284 something. Exactly. Very good, Jaiteshwar 284. Prabhu. So what is the verse? That's why I just try to remember that. You all didn't finish your slokas yet? Vasudhara Prabhu? You didn't give your slokas? We record, Prabhuji, we record and submit. So Yeah. You didn't reach that unit yet? which unit, Prabhuji, sorry? Second canto, 8th chapter. Already. Invata siddhaya nityam granita shasvate stitam kalena natidikena bhagavan vishate hudi. Even the next verse is also connecting verse. Pravishna kanna randrena svana bhava sarodham adhunoti samalam Krishna sarilasya adhasharat. I mean, like Prabhupada is explaining about, these verses are like from Brahma's prayers, that importance of Shravanam. Just, Shravanam, Sunvata Shraddhaya Nitya, just by continuously listening to Srimad Bhagavatam, Rantasya Sachisitam, like taking up this process very seriously. Kalena Nati Dirghena, within a short period of time, Bhagavan Vishate Hrudi. The Lord will manifest or not. Of course, even Prabhupada mentioning here, this verse also Takshanat, immediately. Purnashakti Mata in the last line, is Takshanat. So, this one verse. Okay.
Mataji, but we covered all the important points, Mataji, the 3 kinds of miseries and also the 3 sections of Vedas, Karma Kanda, Jnana Kanda, Upasana Kanda, and the importance of Shavana Mataji. Very beautifully covered all the important philosophical concepts. And you also refer to the important Sanskrit words and synonyms in this verse. And yeah, Mataji, so the room for improvement in your body presentation, what I feel is that I think you didn't quote enough verses from your memory, Mataji. If I am right, if I heard the lecture properly. And 11 verses. I mean, I just quoted 2 verses from the Prabhupada's purport, which Prabhupada is referring. Maybe you could quote many verses, like other verses which are glorifying Srimad Bhagavatam. Like at one point, Prabhupada is glorifying. Of course, this is one of the verse in the glorifying Srimad Bhagavatam. And there are so many other verses. Sambai Sriyamana Krishna Paramurse, Bhakti Rityadade Pansam Soka Moha Bhayaba. You can quote many other verses from glorification of Srimad. If you just type in the internet also, there are many verses from Chaitanya Charitamrita and from other scriptures glorifying Srimad Bhagavatam. And so I feel that, did you quote Mataji? Did anybody notice? Did anybody notice Mataji quoting 5 relevant verses from Srimad Bhagavatam relevant to this verse or purpose? No, Prabhuji. Maybe not Yeah. 5. They were, but not 5. Not. Okay. Okay. Yes, Mataji. So only this is a room for improvement, Mataji. You can quote some relevant verses, Mataji. Purnashakti Mataji, are you with me? Yes, okay, Prabhuji. Okay. Okay. And then, yes, the practical application, Mataji, I really appreciate you covered the relevant purpose, modern mission, and also the personal application at every section, I feel. Also the preaching application. And even Prabhu also asked the question that the competition. So you also explained, shed some light on it. You really answered the questions very nicely. Of course, that really uh, describes the preaching application. But at relevant sections, you also explained the personal application. I really appreciate Matthew. So I don't see any room for improvement. I think it did good justice to practical application. You have spent enough time for that too. So, but overall, Matthew, it's a very wonderful presentation. Thank you so much. Really appreciate your presentation skills because, of course, you already mentioned that you are a Bhakti leader, you're preaching to some Matthijs. Very good. You can continue like that, Matthew. My best wishes for you. Hare Krishna. Would you like to respond to your feedback, Matthew? यस प्रभुजी, एक्चुअली मैं सीमित हूँ, मेरा ज्ञान सीमित है, तो मैं आपने रिकमेंड करने के लिए बोला, उसको ज्यादा रीडिंग कर, ज्यादा श्लोक लर्न करूंगी, तो आई थिंक मैं थोड़ा सा इम्प्रूव करूंगी इसको. Yes. Sure. Yes. The Thank you. slokas will add weight to your presentation, Matthew. So the presentation will go well करेंगे. It's good. Come on. तो भी करूँगा. अरे प्रभु के करना. Fine, Matthew. And then, yeah, this is Prabhu who is going to give feedback on Matthew's presentation. I don't receive any. Shubhami post Mataji. of it. Yes, Prabhuji, it's my turn. Yeah. Hare Krishna, Mataji, Dandavat Pranams. It was so nice, wonderful, excellent, amazing presentation. I felt like I am sitting in morning Srimad Bhagavatam class and listening to very, very experienced and senior devotee. So it was so nice and you're so confident and it was, I felt so happy. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा था माताजी, very, very nice. And बहुत अच्छा श्लोक आपने select किया माताजी. It was so nice to listen about that shloka and Sambandh Abhideya Prayojan. About that you have explained very well, Mataji. It was so nice to means the nice understanding what you shared with us, and also dharma, artha, kama, moksha. So about this also, these 4 items you have explained very well, Mataji, and about irsha, nirmatsaranam, so that one also. So how you I think made us realize that by understanding Bhagavatam properly, we will be means matsar mukt ho jate hain. Like that you have explained. It was so nice, Mataji. And
So everything was very nice. I felt little Prabhupada's mode and mission, like little. It would have been if you would have added. Have been very, very nice, Mataji. So only that one I wanted to add, Mataji. Otherwise, it's a perfect presentation, and we really enjoyed, Mataji. Thank you so much. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Mataji. Hare Krishna. I think Prabhu is not there. Hare Krishna, Prabhuji. Yes, Prabhuji's connection. Yeah. Okay. Whose iPhone? Whose iPhone? Personally? That's me, Mataji, actually. Oh, I need 2 corrections to record, so that is how I do it. Prabhuji is back. Prabhupada's mission and mode, I didn't means get where Mataji quoted about that. She shared. Has she explained about Prabhupada's in our yes, presentation today? lots. Uh-huh. Lot of examples of Srila Prabhupada's. Okay, okay. Where I think Mataji's missed out is only Srimad Bhagavatam shloks. Okay. Maybe misuse of policy. Okay. And I think Now, Mataji has also given the personal application also. I think he has. Yeah, that she has given. Yes. Okay. So separately, I thought separate section will be there for Prabhupada's modern mission, because I didn't do that. So I thought at the end she will, before personal application, she will add this, I thought. So, okay, within the presentation, it came with the presentation. Okay, then it is fine. Hare Prabhu, I'm audible to you. Yes, Roji, yes. Yes. Yeah. So thank you so much for coming to the feedback. So hope everyone has shared their feedback on Mataji's presentation by clicking the form. So shall we go ahead with the next presentation? Roji, Inspector Prabhuji, are you ready? Roji, you can start, Roji. Yeah, if you're ready, you can start. Hare Krishna. Jai Radha Madhava Jayo Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jayo Girivaradari Jayo Yasodhanandana Jayo Braja Jana Ranjana Jayo Yamuna Tiravanachari Jayo Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. I'm a Mukunda Das from Malaysia. Today's sloka. Myself in Malaysia is called Malacca. I'm just a Bujari there. So do service in the center. Today's sloka is chapter Canto 2, chapter 1, text 5. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tado Jayamudiraye Nashtraye Subhadyesu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Sloke Bhakti Bhavati Naistike. Srimad Bhagavatam 2.1.5. The first step in God realization. Tasmat Bharata Sarvatma Bhagavan Ishwaro Hari Sotavya Devyaksha Smartavya Shachedasa Vayam. What meaning? What meaning? Tasmat, for this reason, Bharata, or descendant of Bharata, Sarvatma, the super soul, Bhagavan, the personality of Godhead, Ishvara, the controller, Hari, the Lord, who vanquish all miseries. Sartavya, this to be heard. Kirtavya, to be glorified. Cha, also, Smartavya, to be remembered. Cha, and Ichata of one who decides distress. Abhayam, freedom. I need to read the purport. Purport. A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. In this verse, Srila Sukadeva Goswami was described how the foolish materialistic attracted man are wasting their valuable time in the improving the material condition of life by sleeping, indulging in the sex life, developing economic condition, and maintaining a bad relative who have to be vanquished in this in oblation. Being engaged in all this materialistic activity, the living soul entangled himself in the cycle of law fruification. The entire of chain of birth and death in the 8,400,000 pieces, 1,000 pieces living life. The acquired vegetable and replicate and bird and uncivilized man. And then again the human form, which is chance to getting out the cycle of fruitive action. Therefore, if one describes freedom from this visual cycle, then one must get to act as karmi or enjoy of the result of one's own work, good or bad. One should not do anything either good or bad on his own account, but must execute everything on behalf of Supreme Lord, the ultimate proprietor of everything that be. This process of doing work is recommended in the Bhagavad Gita 9:27 also, where in instruction is given for working on the Lord account. Therefore, one should first of all hear about the Lord. When one was perfectly and submissive, Christianizing heard, one must glorify his act and deed, and thus it will become possible to remember constantly the transcendental nature of the Lord. Hearing about and glorifying the Lord are identical with the transcendental nature of the Lord. And by so doing, one will be always in the association of the Lord. This brings freedom from all sort of fear. The Lord is super soul, Paramatma, present in the heart of all living beings. And thus by the both hearing and glorifying process, the Lord invite the association of all his creation.
This process of hearing about and glorifying the Lord is applicable for everyone, wherever he may be, and he will did want to be ultimate success in everything in which one may be engaged in providence. There are many classes of human beings, the fruitic worker and a philosopher, the mystic yogis, and ultimately the unallied devotees. For all of them, one and the same process is applicable for achieving the desired success. Everyone want to be free from all kind of fear, and everyone want the full extent of happiness in life. The perfect process of achieve this here and now is recommended in the Srimad Bhagavatam, which is untreated by such a great authority as Srila Sukadeva Goswami. By hearing about and glorify the Lord, all the person activity become more into spiritual activity, and thus all conception of material misery become completely vanquished. Hare Krishna. At the beginning of this chapter, we must have Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Salagaya Shakshorumilidam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhudri Srimati Bhakti Vedanta Swami Namni Namaste Saraswati Devi Garvani Prashadi Visheshwamavadi Prashara Vashadari. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, all the Matajis and Prabhus. Thank you very much. Sorry, because we give another chance for me to present this Bhagavatam. At the beginning of this chapter, Sukadeva Goswami concluded the Parichat Maharaja's wonderful question, because this question is very meaningful and very for all mankind. What is the ultimate duty of every person, especially one who about to die? There were a lot of sages with a different opinion, but Sukadeva Goswami suggests Bhakti Yoga is the ultimate duty for all mankind, ultimate goal to achieve their perfection, especially in this age. Sukadeva Goswami proved in previous superiority of the Bhakti Yoga in previous verse, Srimad Bhagavatam 2:1-3, Nirdaya Hirdaya Nirtam Vyaveyana Cha Eva Vayam Eva Chapayam Rajan Dumba Varane Rava. And the previous sloka from this chapter, a question of what should be chant, heard, and remember arise. Example for Grahamedi, who are always busy to earn to earn and maintain their family life or friends, who are waste their day by working hard for the family, and at the night in sex and sleep. Therefore, in this sloka 2:1-5, Sukadeva Goswami say that only thing that would doing by chanting, hearing, and remembering the Lord, how worth doing. This is only duty we must be doing. It is said that the Lord Hari should be heard and glorified and remembering. Surtavya Kititavyacha Smartavya Smartavyacha by those desiring freedom from fear, Ichchata Abhayam, in this sloka. There's three important things: Kirtavya, Kirtavyaksha, Smartavyaksha,
is very important by remembering and chanting. To always remember Krishna and never forget him is possible by constantly chanting the holy name. In Chaitanya Charitamrita Madhya Leela 22:113, Krishna is the original of Lord Vishnu. It's called Adi Narayana. He should always be remembered and never forget him at any. All the rules and regulations mentioned in the Shastra should be served the two principles. First is remember Krishna constantly and chanting constantly the holy name. These are two principles, important principles. In this verse is quoting from the Padma Purana. There are many regulative principles in the Shastra and direction given by the spiritual master. This regulative principle should be act as a servant for basic principle. That is, one should be always remember Krishna and never forget him. This is possible when one chant Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. That is a very most strict. Therefore, one must strictly chant Hare Krishna Mahamantra 24 hours. Is mentioned in Chaitanya Charitamrita. The first class yogi is he who are always thinking of me. This is a teaching of Lord Kapila to Devavadi. Who is the first class yogi? First class yogi is always thinking of Krishna. And one should be remember that Krishna is within his heart and thinking of him. This is a proof, a proper system of the meditation. Proper system of meditation is if he always chant Hare Krishna mantra, he will be always remember Krishna. And immediately the form of Krishna will awaken within their heart, our heart. The process is always thinking of Krishna is the process of Krishna consciousness. The first class yogi is he who always concerned of Krishna. One be concerned of Krishna by hearing about him, Samsit. Teaching of Lord Kapila. The importance of remembering Krishna. One can remember the Lord in constant devotional by the great blessing of process of chanting of Mahamantra. By chanting the mantra, we are also eager to do the service and can remembering the pastime of Krishna. Now that is the benefit by chanting the Mahamantra. That means all the pastime of Krishna is awakened in our heart, and we became interest to know more and more, and we have no feel tired to hearing more and more about this. That means our hearing process is with the rasa. We get some pleasure from the hearing. Hare Krishna. In Bhagavad Gita 8:14, Ananya Cheda Sadatam Yome Smrati Nityasya Tasyaham Sulabha Partha Nitya Yuktasya Yoginaha. For one who remember me without devotion, I am easily to obtain. O son of Partha, because of this is concerned engaging in devotional service. From Srimad Bhagavatam 2:1-1-3, the story of Katwangam is described there. Anybody know the story of Katwanga? It's very Raja Rishi, same like a Parichet Maharaja and Yudhishthira Maharaja, Katwanga Maharaja. Described here the story. His life only a moment, one muhurta. Anybody know how long is one muhurta? Please. Anybody can try? 48 minutes. Huh? One muhurta is 48 minutes. Only 48 minutes. In Katwanga Maharaja, they invite to heavenly planet to defend from the demon and win
And Katwanga Maharaja, because he's a devotee, always thinking about their prescribed duty, and they do their duty to make the win, and they never attach with any material thing, where all the opulence in heavenly planet, they have a lot of opulence in this, that. But Katwanga Maharaja just inquire, how long I be in this body? I went free from this body and be pleased with the Lord eternally. And unfortunately, he only get the only one murta. And when they heard about this, that life is only one murta, immediately they left this heavenly planet, come to the earth and prepare to meditate in the lotus feet of a Supreme Personality Godhead and get the perfection in their life. That is Katwanga Maharaja. By remembering him, they immediately get the blessing, because he practice, although they are very well-known king and Rajarishi, they always meditate over Krishna and chant. Same like Parichita Maharaja. Here, although they have emperor of the world, by the eagle to remember Krishna's pastime, because that Sukadeva Goswami asked this question, what I need to do? By blessing, we get the Srimad Bhagavata Purana to make us to remember our original occupational duty and what we need to remember to get the real peace in our life. Okay, Hare Krishna. Lord Chaitanya say that one can practice remembering Krishna by chanting this name always. By chanting the always Hare Krishna Maha Mantra, we can remember Krishna. Because our ultimate goal of our life is remember Krishna. And we must describe our duty. In Bhagavad Gita, Krishna advised to Arjuna, simply by remembering him and give up this occupation. This is the Krishna advice. The Lord never suggests anything impractical. This is a material world. In order to maintain the body, what is to work. The Lord therefore tell Arjuna that he need not give up this occupation, but he is engaged in the occupation he should remember Krishna. That is sloka. Anybody remember the sloka in Bhagavad Gita? Regarding you must do the duty and remember Krishna. Manasamar, anybody remember? Tasmat sarveshu kaleshu mam anusmara yuddhya. Yeah, yes. Mam anusmarasya yuddhya. By you must do your occupation duty by simple. Then you remember me also and do the occupation duty. That is Krishna one. This kind of practice is recommended in the Kali Yuga, this age. By describe our duty and then also remember Krishna by chanting the holy name. Because of a practice, we must have always chanting and reading Bhagavatam and hearing Bhagavatam, and we remember Krishna, and we have to get our order, our daily duty. While chanting the Hare Krishna Maha Mantra, one is reminded to the Lord's activity, reminded of the Lord's activity. A devotee is always thinking of the Lord constantly while chanting the Hare Krishna Maha Mantra. The word Krishna and Hare immediately remind him of all the Lord's activity. That is the beauty of the Hare Krishna Maha Mantra. They can reveal all the activity of Krishna. Actually, Krishna's activity to make the conditioned soul to understand him and come to the eternal above. Janma karma chame divyam yogam devadi tatvadaha tvaika deha punarjanma naidi mame disvarga. You will come to me by
remembering the pastime of Krishna. You can come to Krishna's above, where the repeating burden that it never take place. Is Srimad Bhagavatam 5.1.6. A devotee is always thinking the Lord constantly while chanting a Hare Krishna mantra. The word Krishna and Hari immediately remind him all the Lord's activity. Bhakti Rasamrita Sindhu 1, 2, 2, 3, 4. Ada Sri Krishna Namadi Nabhava Griya Hindriya Seva Mogihi Jivado Swayam Eva Sukti Ada. No one can understand Krishna as he is by the blood of material sense. But he revealed himself to the devotees, being pleased with them for their transcendental living service of him. We are beginning our devotion service by chanting and hearing and chanting the Krishna's name and its quality. And the nectar of instruction, text 8, is a very interesting sloka. The essence of all advice is that one should utilize one's full time, 24 hours a day, in nicely chanting and remembering the Lord divine name, transcendental form, quality, and eternal pastime. Therefore, gradually engaging one tongue and mind. But here, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur give comment for this verse, following up this verse. In neophyte stage, one should always engage in hearing Krishna Katha. These are called Sarvanadas, the stage of hearing. We all beginning by hearing, by reading book and hearing about the Krishna, and we are interested more and more. By constantly hearing the transcendental living holy name of Krishna and hearing of his transcendental form, quality, and pastime, one can attain the stage of accepted called Varnadasa. When one attains the stage, he becomes attached to hearing Krishna Katha more and more. When one is able to chant in ecstatic, he attains the stage of Smarana Vasta, the stage of remembering, recollecting, observing, stopping meditation, constantly remember the tongue's trance and its 5 items of possessive Krishna Smarana. The first remembering of Krishna may be interrupted at interval, but later remembering produce the uninterrupted. It is described by Bhaktisiddhanta Saraswati. What is the beauty of the remembering and chanting the holy name of Krishna? It can be plus all the obstacles in their life. The topic of Krishna is so auspicious. They can purify the speaker, the hearer, and inquire. They are compared to the Ganges water which flow from the top of Lord Krishna. Wherever the Ganges water go, they purify the land and the person who are bathed in them. Similarly, Krishna Katha or the topic of Krishna are so pure that whenever they are spoken, the place, the hearer, and inquire, the speaker, and all content become purified. This is a mode of Prabhupada. Mode and mission. Distribute, translate lot of book and distribute the knowledge of Krishna, Bhagavatam, Bhagavad Gita, and all the Krishna's books, and make everybody reading. By reading, they can remember. That is a really Ganga can purify. Anybody bought the book and reading, immediately they can purify. They can be the Dhamma of the Bhakti, Krishna Bhakti is awakened in their heart. They say beauty. Robert, make a
Krishna Kada is in every town and village, fulfill the desire of Chaitanya Mahaprabhu. Then we save all the conditions, so who take part in Sravana and Kirtana and purify. Then they can personally, personally they can taking part in service and get the taking personally get bliss, happiness and satisfaction, and come to the real occupation duty. We are here in the center. We also try to execute the order, the Prabhupada mission, by do the preaching activity. We have observed all the festivals different in a different place, and lot of Harinam and school program, house program, and never forget the distribute book. And then we have arranged the Sastra Dana program to get the sponsor book and distribute in the college and the school to fulfill the Prabhupada mood and mission. To encourage everybody to hearing about Krishna, and they can chant. Okay. The purpose of our Krishna conscious movement is to teach people to understand what is the constitutional position of the living entity. The Jiva is eternally the servant of Krishna, the Supreme Lord. 216 Srimad Bhagavatam say, next sloka, Janmalabho Paropumsham Ande Narayana Samadhi. By practicing the mystic power or by perfect discharge of occupational duty is to remember the personality Godhead at the end of their life. No one in this material world was become free from four principles of birth, death, and old age and disease, even by flying to other planet. But know that you have a fear, my Lord, that is a feeling in fear of you, and the living entity having obtained the shelter at your lotus feet by your mercy, sleeping in full metal space. This is in Srimad Bhagavatam 10, 327. The beauty of the hearing and chanting the holy name. They can be can free from the repeating birth and death. In my case, I also very educated. My English is also very bad, but anyway, by hearing, I never read Bhagavatam. I already come full time. Then only we read the Bhagavatam. First service I did a distribute book, especially in Singapore. We distribute book. We have some associate by the Prabhupada disciple and some devotees. They give some mantra to how to push this book. This is our main goal, because we must make happy for Prabhupada. Then you get the blessing. This is first we all engaged like this to distribute book, and we successfully distribute a lot of book. Everybody is so eager from morning to evening. We distribute book. Then only we are slowly hearing Srimad Bhagavatam. We are regulated. Every morning we are chanting and hearing. From that only my attachment to hearing Krishna Katha is appear. Then regularly we are hearing from the devotees. Then we have now we can be we do some service here, and we maintain our another good thing, my English also improved
by reading Prabhupada book and that is the beauty of Prabhupada book. When I'm in become full time, then one of my god brothers, they advise you please try to read book, Prabhupada book. Then slowly your English can improve. Then you also can understand. Then you have eagle, you can distribute more book and can please Prabhupada. In the way we also can interest to know this Bhagavatam, the beauty of Bhagavatam. Hare Krishna. Therefore, we can summarize this. Therefore, we can summarize that those desiring freedom from death must hear about glories and remembering the Supreme Lord. Then why should we take any process? We can chant. By simply chanting and hearing, we can get a professional of life. Then why we go to other process? This is a simple process given by Chaitanya Mahaprabhu to us. Let me conclude this presentation with the CC Chaitanya Charitamrita 17 story 133. Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha Purna Sutto Nitya Mukto Abhinatva Nama Namino. The holy name of Krishna is a transcendently blissful, as bestowing all spiritual benediction. For it is Krishna himself, the resort of all pleasure. Krishna's name is complete, and it is the form of all transcendental melody. It is not a material name under any condition, and it is no less powerful than Krishna himself. Since Krishna's name is not contaminated by the material quality, there is no question of its being inviolate with Maya. Krishna's name is always liberated and spiritual. It is never conditioned by the law of material nature. This because the name Krishna and Krishna himself are identical. This is a story, one story regarding the grandfather and grandson who were living in the mountain area. One day the grandfather asked the grandson to bring the water from the nearby river from the, the bucket for keep the coal. Then as to get the water, the grandson is very enthusiastic to bring the water from the river. And what happened? They tried to bring the water, but the basket is full of the hole. They cannot, the water cannot stand there. Then they try a few times, and finally the grandson become very tired. They say, no, I don't want to bring the water because the bucket is full of a hole and the water is not stand there. Then the grandfather say, okay, now you see inside the bucket, what you can see. So if no water, but I see very clean, the pot is very clean already. This is why we are chanting the Hare Krishna Maha Mantra. We will clean our heart and we can what do you call? We continuously we can remember Krishna. This is a Chedo Darpana Margina which happened there. By continually chanting, sometimes people ask, why you chanting? We never get anything, we never get any money, anything. But you don't know, we get the real bliss from our heart. We have a connection with the Supreme Lord in our heart. And we certify whatever we have. That is the importance of the chanting and hearing of the holy name of Krishna. This chapter, this ultimate duty of a person. By remembering and
Anybody have any story in Srimad Bhagavatam to highlight this remembering? Anybody? Hare Krishna. Sorry, Roji, can you repeat again? Any story in Bhagavatam connection with the remembering, by chanting and remembering, you can get the profession. Prahlad Maharaj. Yeah, Prahlad Maharaja. Somehow? I have Arjuna. We finished the first canto. What about the chanting part? What? Vartavya. Arjuna? Remembering the Lord when he left the world in the first canto. முடிஞ்சிச்சு டைம் இருக்கு எனக்கு. Oh, yeah, I heard from Bhagavatam, from Mahabharata, I heard this, some devotees, then the story, how the Krishna, Arjuna is remember Krishna, you know. Once, yeah. Anything, Prabhu? Nothing, Roji. Go ahead, Roji. Okay. In Mahabharata, they have a story. Once Narada come to the Dwaraka, there is so Krishna is there, and all the what call Lakshmi, they complain to the Narada. They say the soon Pandavas went to Vanavashna, and Krishna also left our Dwaraka and follow them. And Krishna, what Narada is so what you call they want to know why Krishna also follow. That is a punishment given to Pandavas because it's a misdeed. He entered to the forest, and Krishna is the king of the world, and he always must be happy. And why he must follow the Pandavas there? And he's tried to go where in the Pandavas situated is that time is in the Vanavashna, and they saw Krishna acting according to the devotees' will. He also become a play for them, play with them, and do a lot of things to pluck flower, to pluck the fruit, and everything is be together like a friendship, you know. And Arjuna, Narada is so surprised to see this kind of activity and go and ask to Krishna, Krishna, why you be here? Suppose you must be in the palace. Why you be sleeping in the jungle with the Pandavas? You must be in the palace. All the Lakshmi is waiting for you. We must be there. And Krishna say, oh, you must be so tired. Why don't you go and take bath and come? I can explain to you. And ask to Narada and go and take bath. And then he'll come. And so in under the big tree, Arjuna, Krishna is lying in Krishna lap. And Narada, they saw this is more angry. They say, how dare there's a Manida, same like a man, Arjuna can be sleep in the life of Krishna. Krishna is a supreme personality. You know, he's a source of everything. And in the anger mode, the Narada is coming near, and Krishna says, quiet, don't talk anything, because Arjuna takes sleep. I don't want their sleep is disturbed, you know. Then they saw one small hair in the body, in the head of what you call Arjuna, and they take this hair and give to the Narada, asked to put in the hair and see how the vibration is. Then when the Narada take the hair and put here, they can see Krishna, his name is chanted by their hair. We know the hair is unconscious from our body, but still the small hair can also chant the Hare Krishna, Krishna's name, Krishna's name. Then Narada becomes so shocked already to hear this thing. The small hair can be chant the holy name of the Krishna, and how dedicated of Arjuna is, because therefore Krishna is always there, or people always chanting the holy name.
Okay, Hare Krishna. Any question, Prabhuji? Any comment? No question. Sorry. Any comment? Prabhuji, I Hare have. Krishna, Prabhu. No, Prabhu. Yeah, you should also take questions, Ravi. And we want to hear your realizations. Oh, Prabhuji, can I ask question? Yes, Dr. Bharat, Prabhu. yeah. Go ahead. Yes, No please. problem. Prabhuji, while we totally understand that bhakti yoga or chanting or remembering Krishna is the way to go, I was wondering why when Krishna spoke Bhagavad Gita, he also spoke about Karma Yoga and Gyan Yoga. So can you just tell us something why Bhagavad Gita also includes this Karma Yoga and Gyan Yoga, Prabhuji? Hare Krishna, Prabhu. Thank you for this question, but I try to answer. I heard this because all the process in Bhagavad Gita is conclude to the come to the remember Krishna. Sadatam Kirtayanto Ma. Make them to come to the position of Bhakti Yoga. Prabhupada say all the other karma is a footstep for the come to the remember Krishna. That is the ultimate goal. Bhakti Yoga, Jnana Yoga, Karma Yoga, other different process come to the point where we can remember Krishna. Narayana, para, what do you call this chapter? Just now we are reading. Ante Narayana Smriti. Where we come to the position, we can remember Krishna when we are living this body. Sorry, Prabhu. Anybody try to give answer? Correct answer. Hare Krishna. This is already sufficient for you, I think that answers Prabhuji. Thank you. Thank you. Thank you, Prabhuji. Thank you. Hare Krishna, Mukunda, Prabhuji. I just want to hear the story which you shared about the grandson and the grandfather. I didn't actually get it, Prabhuji. Can you please? Prabhu, I cannot never clear, Prabhu. You. Prabhuji, Can you please share it in you share the story of grandfather and grandson again? Oh, the story Not of full. grandson. You can just share it in a nutshell, Prabhu. You can just brief it up. Not so elaborately. Oh, the story is actually to teach the Yeah, Prabhu. Yeah, Prabhu. I just want you to just summarize the story once, Prabhuji. I didn't get the essence of it. Okay. Thank you, Prabhu. The story of the grandson and grandfather, because the father always chant the holy name and always meditate the pastime of Krishna. Then the grandson will say, why are you so busy with this kind of thing? And always you'll be chanting and always you become alone there. What do you get from this? And for teach the grandson, the grandfather asked to bring the basket of full of the whole daily basket to bring the asked to bring the water from the river side river, nearby river. And the grandson is very eager to bring the water, but unfortunately the basket is full of the hole. The water is not stand there. Then they try few times, then become so tired already. Then they say, what a point I will take the water because the basket is full of hole. But originally the basket is full of a deity also because it's full for the, what you call charcoal, what you call charcoal, charcoal, Prabhu, for use for the burn the fire. So dark and this thing. But after few times they take the water, and what happened? The basket becomes so clean. But because the grandfather asked, teach them, you cannot see whatever benefit we get from this thing. You cannot realize. But when you're chanting, our heart can be clean. Then we can be get the divine bliss from the thing. Because I continue chanting and hearing. I'm very busy in chanting because I get the bliss. That is how small story to teach them grandson. Thank you, Prabhuji. So
Yes, Prabhu. Thank you so much for sharing it again, Prabhu. But still, I didn't get that sense. Can anyone, Kirtita Mataji, can you please, the end? So the grandfather asked his grandson to go and get the water from the nearby river, with a basket. So whenever he It brings has the lot of water, holes. holes, I got it. The Okay, pot and has then, lot of holes. But he said the pot okay, is cleansed. His point was Nama Chintamani. And the Nam, by taking Chaitanya Rasa Vigraha, by keep chanting, it doesn't look from outside. There are a lot of holes in our body. okay, Outside doesn't look it's cleansed, but inside the heart is cleansed. So he said the pot is cleansed inside, despite lot of holes. okay, okay. Excellent, excellent. Mukunda, thank you so much for sharing. I love Steve, Prabhuji's can you analogy. please? It's very nice. Yeah, it was very good, Thank you, Mata. Mataji. It's just because of the accent, Mata. Because of the accent, I was unable to catch it properly. It's fine. That was Prabhuji. That So, was the as Kirtida Mataji told that there are a lot of holes are there, and the grandson was going repeated time 3-4 times to bring the water, but ultimately no water came because of the hole it is going out. So yeah. so And that Prabhu is the mentioned by something about the charcoal. I mean, Yeah, charcoal. yeah, because Charcoal. what is it called? the pot is inside the charcoal. I mean it was laying the charcoal, and there are It a lot was of holes. black, Prabhuji. Yeah, Yeah, the it was pot was black, black. not charcoal. It was a completely black. So by going repeatedly to bring the water, ultimately water is not coming because it is going out because there are a lot of Okay. And holes. also, it removed the charcoal inside the pot. Yeah. So ultimately, at the end of the day, Oh, after repeated times, then grandfather is asking grandson that what from this. So that means this mm-hmm. is teaching that by going multiple times there, automatically the inside it has been clean. So the pot is already clean. So by reading of Excellent. Bhagavad Gita number of times, it is automatically heart is purifying actually. Yes. Good. It's kind of similar story where the chastity of Radharani is tested. I think it's not maybe it may not be in Srimad Bhagavatam, maybe some other Purana. And you know the common story, right? That everybody is criticizing Radharani. Does anyone know this story? That she is not so chaste. Then Krishna wants to prove the chastity of Srimati Radharani. And what he tells is he acts like that he's sick. He's suffering from some kind of fever. And Krishna himself disguises as a This is Krishna's story. doctor. Krishna himself disguises as a doctor and he comes to him and he says that, okay, Krishna is really sick. Only um, one who can bring the water from the nearby river in a pot with full of holes. Only that water will be, that water is a treatment for the Krishna sickness. So then, but who can bring the water with a pot full of holes? Nobody can. And he also tells that who is pure, who is so chaste, who is 100% chaste. So only they can bring the water in a pot with full of holes. So then everybody tries initially. Everybody, I mean, Kutila and Jatila, they come forward that we will bring. We are very chaste in Vrindavan, the whole Vrindavan, and they go. And as soon as they dip the pot, in the full of in the river, so the water immediately comes out of the holes. So they are so embarrassed that they're not chaste. And then Radha Yashoda Maya wants to try because she wants to get the treatment for the Krishna. So she can't see the suffering of Krishna. But Krishna doesn't want Yashoda Maya to go because she's also very chaste. So then Krishna tells her, no. The mother's doctor immediately tells in the form of Krishna that mother cannot go. So then they all recommend that Srimati Radharani to go, and then she goes and she takes the pot and she brings the water back, and because of the chastity of Radharani, water doesn't come out of the house. Something similar story. Just to share. Thank you so much, for sharing. So I guess nobody has a question. I would like to share the feedback. So thank you so much, Mukunda Prabhuji, for a wonderful presentation. It was very, very much better than your first presentation. So thank you so much. You followed whole guidelines. You tried your best. Okay, I can understand first language. So you might be having a little trouble with that.
But anyhow, overall, it was very good presentation, Prabhuji. So, Prabhuji, first I would like to share the positives and then the room for improvement. First, and the presentation skills, the positives are you reached the audience very nicely, Prabhuji. Start with the Kirtan and you follow the ideal structure in the beginning. Introduce yourself. There was sufficient volume and the language is also fluid. You nicely avoided space fillers too. This time you maintained nice eye contact, Prabhuji, looking into the screen, and you even asked a couple of questions too, checking with the students too. I really appreciate that. And you had a good post too. And yeah, the whole presentation was confident and also confident in presentation. You're flexible too. And you sought contributions from audience. Of course, very less, but that's fine. Just once or twice you did that. And you started on time and also finished before time. And you also tried your best to answer the questions which have been asked by the students. So, well, the room for improvement in your presentation skills could be the only thing is the accent, Proji. I know it's not your first language. The speech is okay, but it can be, of course, if English might have been your first language, it could have been better and you could able to easily understand it. But I really appreciate the endeavor which you have made, Proji. So maybe in your next presentation, as we're already sharing in the class, that you're trying to learn English by reading Srila Prabhupada books. I really appreciate that. When you read Prabhupada books like that, when you keep on giving classes in English, so they definitely will become um, uh, very proficient in speaking English or giving classes in English. Then Thank you. your language will be very easy, very easy to follow also. But you try your best, Rosie. And the second thing is gestures, Rosie. Maybe you can use some more proper relevant gestures while sharing the presentation, while giving the lecture. And I can see your hand rise, but not so many hand movements because body language is also very important while giving a lecture or a presentation. Are you with me, Mukunda Prabhuji? Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Yeah, try my Yeah, best. I have shared a couple of Try things, Prabhu. Yes, 1 second, Mukunda Prabhuji. Yes, as I already told you in the last, Mata in the last presentation, you can regularly check with the audience whether they could able to follow you or not, whether they could able to understand or not, Prabhuji. Yeah. That's proposing a presentation skills from the body of presentation is excellent, Prabhuji. You read the words with correct pronunciation and reasonable fluidity. Give a nice introduction of this verse, overview of this section of Srimad Bhagavatam, and you also explain the important concepts of this verse and also the purpose which Prabhupada shared in the purport, that importance of hearing and also then speaking, glorifying, and by which we can stay continuously in touch with the Lord by always remembering Him. So you also shared the story of Arjuna, how he is always remembering Krishna. And there are so many stories who are always remembering Krishna. Prahlad Maharaj too, who is representative or classic example or epitome of Smaranam. And Prabhuji, you refer to important Sanskrit words and synonyms too, and you supported philosophical points with given verses. You know, I catch that you quoted 2.1.6 and also some nectar of devotion of Sri Krishna Namade and the nectar of instruction. And you ended your presentation of class with a verse from Chaitanya Charitamrita as your conclusion. Wonderful, Prabhuji. Thank you so much for sharing the relevant verses. And practical application part two, yeah, I feel that. So there is no much room for improvement in your body presentation, Prabhu. It was good. Thank you. And then practical application part, you did a good justice to Prabhuji, to practical application, the purpose, modern mission, how Prabhupada kept these different programs, and he wants us to be engaged in various temple programs, so that we can constantly remember Krishna, like chanting the holy name of the Lord and attending the morning program from Mangalajati Bhagavatam class and going for a book distribution, doing different sevas. So everything will make us constantly remember Krishna. So, and
the personal application part, practical application part, do really good job. I don't have much room for improvement in the practical application part. So Prabhuji, and I really appreciate that you gave a nice summary at the end and also conclusion with you shared two stories too. So overall, Prabhuji, it was a very wonderful presentation, Prabhuji. So my overall room for improvement in summary is that maybe the accent, and we can regularly check with the audience whether they could be able to understand or not. And maybe some more elaborate description of his story, I guess. Little bit like a narration, narrating his story. That would be little room for improvement from my side, Mukunda. Would you like to respond to your feedback, Prabhuji? Mukunda Prabhuji, would you like to respond to your feedback? Thank you. Thank you for the comment, everything. I'm try to improve and very fluent. Thank you very much. So patient. Give the chance to second time to Bhagavatam class. It's very easy for me, and I thank you for the Rasagulas Prabhu also, because that day we are discussing and they give some points how to my presentation must be. I'm very thanks for the Rasagulas Prabhu that day. He give the comment and I improve my presentation. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Overall, thank you for all the Vaishnavas and Vaishnavis. Hare Krishna. Shyam Sundar Prabhu, if you are talking, you're muted. Oh, I'm so sorry, Prabhuji. I also noticed that you had a help. You had help from someone in front of you who were helping you. But that's good, Prabhuji, because when you're not expert in that, you can just definitely take some help from others. So thank you, Prabhuji. I really appreciate the endeavors, Prabhuji, because you're such a senior devotee and also elderly person, but still you became a student and you tried your best to learn, to follow all the guidelines of giving the Bhagavatam class in the Bhakti Vaibhava course. Of course, you already know to give Bhagavatam classes. You might have given many in Tamil, maybe in Singapore. So, but thank you so much for being a student and learning and trying to follow all the guidelines and doing your best to share the presentation for you. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. So now I request all the devotees to share valuable feedback on this presentation. Let's take 2 minutes time, Prabhu, and then we can conclude for today. Hare Krishna. So I would like to thank our dear Shyam Sundar Prabhuji, Shyam Sundar Prabhuji, for being with us for all the presentations and guiding us nicely. And if somebody also wants to show their gratitude to Prabhuji, you are more than welcome. And I'm very, very happy to have Prabhuji's association again via this course. So very, very thankful. Prabhuji is very learned, very expert in our scriptures. So hopefully maybe you can get some classes also from Prabhuji in future, if possible. So thank you so much, Prabhuji, for your time, spending time with us, giving your association. We really appreciate that. Thank you, Prabhuji. Thank you so much. I'm audible to you? Now, yes, Prabhuji, but earlier, no.
Yeah, I just got a call. Okay. So I was saying that I'm not so expert, but I'm just trying my best for it. Maybe I had a desire to become a Sanskrit teacher, but not now in future. With all the Vaishnava's blessings, I'd like to teach in my institute very soon. So thank you so much for your uh, reflections. Well, Vishal Prabhuji. Hope everybody's done with sharing feedback on Prabhu's presentation. Maybe shall we conclude, Prabhuji? Anybody wants to share anything? Hope I see you all in your presentations, seminars, PPT presentations. Okay. Yeah. You are not done with that, right? Was it a problem? No. Yeah. Maybe most probably I may come if I am available. Definitely, I would like to be a part of it. So thank you so much, everyone, Thank for you so much, joining. Even Prabhuji. Thank you so much. We I learned learned a a lot of lot. things. Me too, Thank you. Even I Thank you so learned much, from Prabhuji. Kitida It was Mataji. She was a very lots of guidance expert. we got from you, and it was really means wonderful guidance, Prabhuji. What we means what you have given to us. So it really helped us to improve ourselves in presenting in Bhagavatam class. We try to apply the points which you have said in our Bhagavatam classes. Thank you so much, Prabhuji. Grateful to you. Hare Krishna. Dandavat pranams, Prabhuji. Yeah, Prabhuji seems to be disconnected. You can still speak, Prabhuji. It is getting recorded. I can share the link with Prabhuji. He can. Hare Krishna. Am I audible, Pratidhara Prabhu? Yes, Prabhuji. Now, yes. I just lost. I'm so sorry. Yes, Shobhami Mata is sharing something. I really appreciate Mata. Thank you so much for your feedback, your comments. Hare Krishna, Prabhuji. Dandavat pranams. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhuji, I also wanted to share a few words. I wanted to first of all thank you for being so generous with your time. Sitting through like what 8, 9 presentations, 12 presentations of Bhagavatam. I don't know about you, but it becomes a stretch, and you are already doing so many services. On top of that, you are also attending these classes. I'm really, really appreciative that you're taking all that time, sitting, hearing it so much that you are actually able to give us feedback about all that. You are also carefully listening what verses we are quoting and everything. Prabhuji, hats off. Amazing service that you're doing. Even more, I wanted to express some gratitude that you had some resources and you very generously shared them with us. Those Canto 1 through Canto 12, I think you shared all those resources with us. A very, very important resource. So thank you very much, Prabhuji. I hope to have you attend more of our programs, give us more feedback on how we can improve ourselves. Thanks, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhuji. Yes, Hare Krishna. Thank you, Prabhuji, for your giving the feedback and kindly. And everybody has already told your qualities, everything, and how you are patient. So only I'll just tell one thing that Prabhuji I request, not tell, I request only that if you come to the forum and give the class, we would like to hear from you also. So that so that we are aspiring right now, I'm giving regular Bhagavad Gita classes in the temple hall in our temple from Tirupati. Okay. Definitely, I had a desire to start teaching with my institute, but I'm just taking my time to have good grip with the scriptures, so that I can become an expert teacher. For sure, Prabhuji, for sure. You are already Prabhuji expert. Thank you. Hare Krishna, Prabhuji. Dandavat, Prabhuji. Lot more. Sorry, just 1 minute. Yes, Prabhuji, adding to what everyone was saying, I loved your quotations of, you have a good grip on shlokas, and that's not really easy. I love your quotes. You make us jog our memory. So I do know shlokas, a lot of shlokas, but when you ask me on the spot, I'm forgetting. So you make us jog, and
your grip on shlokas are amazing, Prabhuji. Your quotations on different points with Bhakti, on Shravana. This is beautiful, Prabhuji. And I've written that down. so I will always remember. So thank you so much, Prabhuji. Thank you. Hopefully we have more association together. Sure, Mataji. Even the same advantages from these courses, Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhava, both module 1 and module 2, and also from the Sandarbhas. Most of the slokas, important verses are repeated in the Sandarbhas too. So yeah, often I take this sloka test also for the students. So it's a brushing my memory too. And every morning I spend a little bit of time to learn a new verse every day. Just like Gauranga Darshan Prabhu. Prabhu also shared with me that he learns, he revises all the slokas every day in the morning. After finishing his chanting, he will try to sneak out some time. So he has his notes and time, and he revises all the verses. That's why he could able to quote many verses in his classes. For every line, Prabhu quotes many verses. So I'm trying my best to follow his footsteps too. Definitely. Thank you so much. Thank you so much, as well as Prabhu, you shared. Actually, it's my pleasure, Prabhu, listening to all your lectures because I am learning a lot. That's why I'm trying my best to Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhu, inaudible? Prabhuji, we lost you for 10 seconds, 5 seconds. Yeah. Yeah, I was just to recall. So I was telling that Prabhu, it's my pleasure listening to your lectures. Even though I have so many committed services too, I'm trying to balance it because I don't want to miss because there are some excellent speakers in your batch who definitely will become good speakers in future. I can really assure that. And others also, they will also become, for sure. If they keep on doing these courses, keep on regularly giving lectures, definitely they will also become expert speakers. Thank you so much for asking. Anybody else, Rosie? Will we conclude for today? Prabhuji. Thank you so much, Prabhuji. Okay. Thank you so much. Very much. Thank you so much for your contribution. Thank you. And thank you for teaching us for how to take the class with the sloka and then preaching application, this application. So it is a very nice learning for all of us actually. Yeah. Yes. And just sharing that thing and also sharing the mistakes which we made during our course. Yes, then I'm doing just following strictly the guidelines shared by the Bhakti Vaibhava, because they were designed very nicely. That's why we're trying to follow the guidelines as this. Thank Yes, you, Prabhuji. Prabhu. Thank you. Thank you, Prabhu. Thank you, Prabhuji. Yeah, Prabhu, a few words from me. Actually, Yes. this practical experience was really tremendous changes in my presentation, I believe. So it really helps out. Thank you so much to you. Learn a lot of things, and I have to really keep up with my slokas as well. Thank you so much. Dandut Pranam. Okay, thank you so much. Hare Krishna, thank you so much for feedback. One second. Okay. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Tiger Nath Premanande Hari Hari Bol. Hari Bol. This is Sam Sundar Prabhuji ki jai, Srila Jai. Prabhupada ki jai. 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 Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Jai. Hare Krishna. Jai. Hare Krishna. Hare Krishna.